टॉपिक है टाइम एंड रिलेटिविटी। टाइम वर्ड का यूज तो हम कई बार करते हैं, टाइम कई बार हम इसका रिपीटेशन भी करते हैं। और एक वर्ड है रिलेटिविटी, ये कुछ लोगों के लिए नया होगा और जो बीएससी फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स वो इसे पढ़ चुके होंगे, 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर। First of all, we understand the word frame of reference. Frame of reference. What we understand by the frame of reference? दो चीजें, one is relativity and another is frame of reference. Relativity से हम क्या समझते हैं? Relativity से मतलब relative. When we say that I am here inside the room, हम रूम में इस जगह पर बैठे हुए हैं तो हम अपनी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिलेटिव टू द रूम। हम यहां बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं? रूम में बैठे हुए हैं, रूम में इस प्लेस पर बैठे हुए हैं। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम आरोन में हैं, आरोन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम कॉलेज में हैं, कॉलेज इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम रिलेटिव। हम कॉन्फ्रेंस हॉल में, when we are giving the reference of conference hall, related to the conference hall, we are to the left, to the right, in the first row, in the second row, in the last row. When we are speaking everything in related to the frame around us. So, what is the frame of reference? That is the frame of reference. The frame of reference related to which the position or the motion of the particle or the body is specified is called the frame of reference. We are speaking about our position or we are speaking about our motion. I say that my velocity is 20 km per second when I go through the light, which implies that 20 km per second with respect to what? With respect to the earth, with respect to the bonds, with respect to the trees. Those are stationary and attached to the ground. We are talking about the frame earth. And when I say that I am stationary, what does that mean? I am stationary. Are you a really stationary person? You know, nothing in this universe is stationary. We are moving along with the earth. We can never then what does that mean by stationary? What is the word stationary? We are stationary with respect to the earth, with respect to the ground, and our earth is moving with respect to the sun, and by taking the sun as a frame of reference. Here sun is the frame of reference and related to which the earth is moving, and we are stationary related to the earth, but along with the earth. But we take sun as a frame of reference when we are moving along with the earth. We are moving related to the sun. So that is we understand by the word relativity. Relative, everything is related. Your position is related. Your motion is related. When you are in the train, when you are watching outside, and the person outside the train watching you. For the person outside the train, you are in the moving condition with the 60 or 80 km/h, the speed of the train, and the person inside the train, in front of you in the train,
Now, suppose there are two trains, both are going in the same direction. Then we can see that the person in the second train stationary. We can see that the second train, which is going with the constant speed with you, is stationary for you. कोई ट्रेन अगर आपके साथ आ रही है, आपकी ट्रेन के साथ साथ चल रही है, तो वो ट्रेन भी आपके लिए स्टेशन है, वो मोशन नहीं कर रही, और उस ट्रेन के लिए आप स्टेशन नहीं। Then your train and the second train, दोनों ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दोनों एक सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एंड सपोज पास वाली ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और आपकी ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। Then for you, the speed of the second train is 20 km per hour. Because your speed is 40 and that's 60. So the difference is 20 km per hour. For with respect to your train, the speed of the second train is 20 km per hour. But for the person who is watching the train from the ground, the speed of the second train is 60 km per hour. What am I saying? The position and the motion both depends upon the frame of reference relating to each other. Two words होते हैं, एक तो absolute मतलब वो किसी से related नहीं है, which is not related is absolute, and related when there are two things they are related to each other. Absolute is the opposite word of relative. That's what understand. That is the relativity. One is that position and motion. Another important thing is the time. Can you believe that? The time for the two people, times for the two people are different. For a particular people, 1 hour maybe like 10 hours, or for others like 1 hour maybe equal to half. एक पर्सन का टाइम दूसरे पर्सन से डिफरेंट हो सकता है. Can you believe that? The person talking you from the stage have a different time for the same physical watch, and the person listening have different time. आपको ये 1 घंटा 10 घंटे की तरह लग सकता है कि आप बात करना चाहते हैं, और जो पर्सन यहाँ बात कर रहा है उसके लिए 1 घंटा आधा घंटे की तरह श्रिंक हो जाता है. That is the time. Time is also a relative quantity, like position and motion. This is the theory of relativity. Understand it clearly? जब ये लॉ दिया गया तब भी न्यूक्लियर प्रोसेस समझते थे, और आज भी इसको न्यूक्लियर प्रोसेस समझते हैं. Understand it? Time. What is the time? You know, time will pass events. Let's understand about events. मैं एक लाइन बोलूँगा, this is the event, and when I stop, this is the space gap between the events, and then I speak the second sentence. So that is the second event, and the illusion, the psychological illusion between the events, we call it the time interval. Psychological illusion. That is why there are two different times for two different peoples. जब कोई इवेंट नहीं होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है. मैं अगर 5 मिनट शांत हो जाऊंगा तो बाहर जाने पड़ेगा, क्योंकि सेकंड इवेंट नहीं हो पा रही, स्पेस बढ़ गया है. आपके लिए टाइम अलग हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन चेंज हो जाएगा.
स्ट्रेट को कैसे देखेंगे? Click upon frame.
तीन केस देखते हैं। पहली केस में स्टूडेंट फिल्म देख रहा है, सॉन्ग सुन रहा है और 15 मिनट उसको आता है, उसको बीच में एक फोन आता है और वो कहता है कि हाँ 15 मिनट में 15 मिनट में से टाइम लेता है, लेकिन दोबारा उसको फोन आ रहा है तो 15 मिनट बोलेगा, कहता है 15 मिनट नहीं, आधा घंटा मतलब उसके लिए जो टाइम है वो आधा घंटा स्ट्रीम होगा, 15 मिनट की तरह लगा, 20 मिनट की तरह स्ट्रीम होगा। सेकंड में आपने देखा कि एक स्टूडेंट पेड़ को बड़ा होता देख रहा था, एक इवेंट को जिसमें कुछ लीव्स पैदा होती, पेड़ कितना बड़ा होता है, दूसरी इवेंट में ट्रेन कर रहा है, कुछ पत्ते और आ रहे हैं, कुछ लीव्स और आ रहे हैं, और बीच में जो स्पेस है उस स्पेस की वजह से उसके उस स्टूडेंट के लिए जो 2 मिनट्स के टाइम, 2 मिनट्स का जो टाइम है वो बहुत बड़ा हो गया, 10 to 15 मिनट्स का हो गया। मतलब फिजिकल लॉस क्या होता है, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि 2 इवेंट्स के बीच में क्या करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस दो अलग अलग चीजें नहीं, टाइम एंड स्पेस टुगेदर इज अ सिंगल क्वांटिटी, सिंगल थिंग। टाइम is space. Space increases, and for that particular person, time is space increases. For the same physical watch, हम टाइम की बात करते हैं तो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है फिजिकल वॉच, वो जो कागज चल रहा होता है उसका मोशन या सन का मोशन, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। बट टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज रिलेटिव। टाइम इज आल्सो रिलेटिव। एक साइंटिस्ट थे न्यूटन ने कहा कि टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। पोजीशन एंड मोशन ये तो रिलेटिव हो सकती है, बट द टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। बट यहां किसी ने बताया कि टाइम इज रिलेटिव फॉर्मूले के थ्रू, फिजिक्स के फॉर्मूले के थ्रू प्रूफ करके उन्होंने बताया। यहां पर सिर्फ बात कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले के थ्रू टाइम कैसे स्ट्रीम एक्सपेंड और कैसे स्ट्रीम चल रहा है वो उसमें आगे देखिए। एक पर्सन आपको लगा होगा और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी इसको मान के चलते हैं और एक लाइन यहां से पास होगी, इसके ऊपर से एक लाइन पास हो रही है, लाइन की स्पीड होती है 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो होता है पर्सन जो पर्सन स्टेशनरी है उसके लिए स्पीड है 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट C is the speed of light. Next, एक पर्सन रॉकेट में जा रहा है वेलोसिटी से इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट का डायरेक्शन। अभी हमने देखा कि जब दो ट्रेन से एक डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड कम होगी। आप इस जगह में बैठे हुए हैं, पास वाले ट्रेन की स्पीड कम लगेगी, आपको 20 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसे ही एक पर्सन है वो रॉकेट में इसके साथ जा रहा है और ये यहाँ पे लाइट की स्पीड है, तो इसे हम देखते हैं कि ये जो है ऑन द रॉकेट c माइनस v, इस लाइन के लिए ये स्पीड होगी c माइनस v, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक वैसे ही इसकी वेलोसिटी भी है तो c माइनस t इसकी वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट, ऐसा होना चाहिए। हम जानते हैं कि वैक्यूम हमारे पास मैटर है, स्पेस मतलब वैक्यूम
आउट ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर, वहां वैक्यूम है, जहां कुछ नहीं है वहां वैक्यूम है, हम उसे वैक्यूम कहते हैं। बट कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि वहां भी एक मीडियम होता है, to which we call vacuum. There is a medium and it is called ether. The medium is called ether. अब मीडियम होता है तो फिर फील होगा, जैसे एयर मूव करते हैं तो एयर से आगे हम एयर को फील कर सकते हैं, तो हम फील करते हैं कि मीडियम है, वाटर है तो मीडियम है, या कोई सॉलिड है तो मीडियम है। लेकिन जब आप वैक्यूम में जाते हो तो वहां फील नहीं कर सकते उसको। मीडियम इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। एक हाइपोथेसिस रखी कि जो मीडियम होता है बहुत रेयर होता है। आपके मूव करने से, आपके चलने से, किसी चीज के, किसी बॉडी के मोशन से आप उसको फील नहीं कर सकते। Very high elastic medium exists within the vacuum in the entire universe. That is, entire universe is filled with a kind of medium to which we call ether. Named as ether. Very low density, very rare medium, and very high elasticity. You cannot feel it. It is named ether. हम देख सकते हैं यहाँ मूव कर रही है और ये इधर का एक डायरेक्शन है, फ्लो का डायरेक्शन हो सकता है। Obviously, light moves over. Light की speed is the maximum possible speed. Light की जो speed होती है वो maximum possible speed होती है। हमने कभी ऐसा सोचा कि हम स्पीड बढ़ाते हैं, maximum speed क्या हो सकती है? maximum possible speed क्या हो सकती है? किस स्पीड तक हम ले जा सकते हैं? ट्रेन को कितनी स्पीड से हम दौड़ा सकते हैं? कितनी स्पीड से दौड़ सकते हैं? मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट इज द स्पीड ऑफ द लाइट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड is the upper boundation of the speed. No body can be moved more than that speed. इसे भी हम प्रूव करेंगे कैसे हो सकता है। अगर इधर कंट्रोल इजीली की तरफ है एंड अनकंडीशन ऊपर की तरफ है, तो फिर लाइट की स्पीड 3 क्रॉस 10⁸ से ज्यादा नीचे फील कर रहे हैं। It should be, but हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड हो नहीं सकती। लाइट की स्पीड 3 क्रॉस 10⁻⁸ होगी, which implies that how speed light moves through. ये स्लो चलेगी तभी अपोजिट डायरेक्शन में इधर लाइट की स्पीड एक दूसरे को बैलेंस करेगी। हमने देखा जब एक ही डायरेक्शन में जाता है तो माइनस होती है स्पीड 60 माइनस 40, बट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है 60 प्लस 40 100 हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। 3 क्रॉस 10⁸ से ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल। नेक्स्ट, इफ द अर्थ रिटर्न बैक अराउंड द सन, ये हम देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रही है। फिर नेक्स्ट टाइम पर आती है और यहां देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में इधर है उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। तो यहां से देख सकते हैं कि यहां से अगर कोई लाइट ब्लिंक करे तो डाउनस्ट्रीम लाइट ये इधर के डायरेक्शन में होगी। इस तरह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी 60 माइनस 40 20 और लाइट की स्पीड 3 क्रॉस 10⁻⁸। दैट इज इस वेलोसिटी से ज्यादा होगी डाउनस्ट्रीम लाइट मूव फास्ट। इसको एक बिंदु माना। नेक्स्ट, माइकलसन मोले हम जिसकी बात कर रहे थे उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट किया, इसमें उन्होंने प्रूव कर दिया कि इधर विंड नहीं होगी, इधर नाम की कोई चीज नहीं होगी। अभी भी ये बात है, अभी इस पर गलत चल रहा है। इधर विंड तो नहीं होगी। It is possible that medium remaining oscillation in nature and absolute frame, उसे माना गया है absolute frame। मैंने आपको बताया कि absolute frame क्या हो, आप absolute frame नहीं हो सकती क्योंकि किस मान है आप भी मूव कर रहे हैं, आपको स्टेशन की आप मान ले रहे हैं आपके लिए वो absolute frame है। बट सन की स्टेशन की सारी मूविंग अराउंड इन द मिल्की वे, और मिल्की वे की absolute frame नहीं है, वो भी किसी के चक्कर लगा रही है। तो absolute frame क्या है? फ्रेम का हाइपोथेसिस रखा गया और उस फ्रेम को नाम दिया उन्होंने
लेकिन हमने प्रूव किया कि इनविजिबल तो नहीं हो, इट मे बी ये स्टेशनरी नेचर की हो सकती है, लेकिन विद एक फ्लो ऑफ द नहीं हो सकता। इसके बाद आइंस्टीन्स हाइपोथेसिस, the laws of nature are equally valid in every instance. Understand? यहाँ दो धाराएं हैं, one is Newtonian physics, Newton physics, in which every plane is inertial, and second is non-inertial plane, in which we talk about the relative speed, relative velocity. Understand? When अभी हमने देखा कि जब दो वेव से ही डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव वेलोसिटी इज सबट्रैक्टेड, जो मैक्सिमम से जाती है 60 माइनस 20 रह जाती है। If both of the trains moving in opposite direction, then the velocity gets sum. आप देखते हैं कि आप किसी बस में जा रहे हैं, इससे कोई बस पास होती है तो उसकी स्पीड आपको ज्यादा जाएगी, क्योंकि उसमें आपकी स्पीड में ऐड होगी। अगर आप थोड़ी से लेफ्ट जा रहे हैं और बस राइट जा रही है तो टोटल स्पीड जो आपका मिल होगी 60 plus 40, total speed will get added up. But this is not the case for the light. Light is speed 3 lakh km per second, but you are अगर आप लाइट की स्पीड में भाग रहे हैं तो फिर आपकी तो लाइट की जो स्पीड है वो 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 से कुछ कम हो जानी चाहिए। अगर ट्रेन की जगह लाइट हो जाए, इधर ट्रेन जाएगी तो लाइट चलेगी, दैट लाइट की स्पीड 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 से लेस होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता एक्सपेरिमेंट की ऐसा नहीं। और लाइट इधर जा रही है, आप उधर जा रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम जहां पर बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड से कंपेरेबल नहीं है। आप भी जा रहे हो, आपके साथ चीटी भी भाग रही है, तो आप कंपेरेबल नहीं है, आपकी और चीटी के साथ दौड़ने लग रही है, ऐसा हो सकता है? कंपेरेबल नहीं। ऐसे ही आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से कंपेरेबल नहीं है, therefore there is no such kind of observation seen in inertial frame. Inertial frame, that is where the speed or velocity of the physical body is comparable with the speed of the light. But for non-inertial frames, microparticles like electrons, they can move more than half the speed of the light. If the speed of the light is just half, the speed of the body is just half that of the light, then the speed becomes relative, the velocity becomes relative. If the speed of the light is 3 lakh and the physical body, speed of the physical body is 1.5 lakhs something, then it comes in the region of non-inertial. And the theory of relativity is valid there. The laws of nature are equally valid in every inertial frame. Inertial, that is everything around, where the velocity is negligible. हमारी maximum velocity 100, 200, 300, 1000, 2000, 1 lakh सिर्फ कुछ नहीं होगा। 1.5 लाख से ऊपर अगर वेलोसिटी आती है तब ये लॉस ऑफ गravity हो गया। अदर स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सिग्नल्स के लिए एक्सेट्रा। तो साइंटिस्ट आइंस्टीन ने जो लॉ दिए थे, पहला लॉ उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम चल रही थी इसको सॉल्व करके बताया कि आप जो घूम रहे हैं वो इनर्शियल फ्रेम में नहीं मिल रहा है। इनर्शियल फ्रेम में रिलेटिविटी यहाँ फॉलो नहीं होगी, यहाँ नेचर के जितने भी लॉस हैं वो सारे इनर्शियल फ्रेम में वैल्यू। सेकंड, द स्पीड ऑफ द लाइट in empty space is same for all inertial observers regardless of the velocity or velocity of the source of light. Second law, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये second law कह रहा है कि
Inertial frame of reference where the speed is negligible. As represented the dot light. Observe light. यहाँ CO with the same speed. ये rocket is ये बस में ground पे खड़ा हुआ light is raise हो गई. बहुत टाइम से लाइट इस पर्सन के लिए लाइट 30 से ज्यादा है और इस पर्सन के लिए लाइट 30 से ज्यादा है. जैसा कि हम आमतौर पर देख रहे हैं वो नहीं लाइट की स्पीड पर एक पर्सन की वेलोसिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज़ ऑफ द इनर्शियल फ्रेम्स. No matter how fast the drive of the rocket is moving in inertial frames. Inertial frames. What am I talking? In inertial frame, the velocity of the object is constant. Velocity of the object is constant. Accelerating object comes in non-inertial. See, if both going in the opposite direction, either way, either से light the side or person rocket से आ रहा है, then ये बस होना चाहिए. But according to Einstein, the speed of light is the same, relative speed is the same. See, next. Time depends on the state of motion of the observer. जैसे कि we observe time change. Like clock. Same on the ground. मैंने जैसे कि आपको बताया यूजर ने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट होता है. टाइम इज एन एब्सोल्यूट मतलब सभी के लिए टाइम सेम होता है, कॉमन होता है. Whether it is stationary or whether it is in motion, it doesn't matter. The time is absolute quantity. But Einstein had said that the time is not absolute, but it is relative. According to the Newton, space and time are completely different. If space is space, the time is time. There is no correlation between that. But according to the Einstein, space time two different concepts. जैसा कि मैंने पहले कहा, space and time अलग-अलग चीजें नहीं है. Space time, we call it the space time. As जैसा कि हमने देखा कि जब दूसरा एक्टिविटी होगा तो स्पेस बढ़ता है, टाइम इसमें बढ़ जाता है और वो होने लगते हैं. If all the events are going successively with the short space, then the time space decreases. So different people's different states, different persons and different positions and motions, the time is different. Time is also relative. Understand? ये कोई प्रश्न है तो और लिख रहा है. Going to hall and think में suppose ये rocket है और उसी तरह दूसरा पर्सन है बॉल कर रहा है. That's seized. The second part is catching the ball. In the moving frame, rocket के अंदर move कर रहा है. Rocket के दाएं बाएं कर रहा है. Left right. And another person which is linked with the ground or stationary frame, he is watching that. वो लोग जा रहे हैं. One person throws the ball. It reaches to the second person. Then the distance between them is the 4 meter. Next, t equals 1 second. इसका मतलब टाइम is 1 second. Right? 1 second. V equal to 4 meters per second. 4 meters per second. That is the velocity in the 4 meters per second. Next. Now, अब और ही है. आपको और लगा दी. यहाँ से तो और लाइट भी दे रहे हैं. वाई डी के पास
means 0. Next, C equal to W upon T. Next, यहाँ देख सकते हैं जो पर्सन नीचे से खड़ा होकर देख रहा है, जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, उसकी घड़ी है, उसके आगे भी उसने घड़ी लगानी है, और एक घड़ी उन दोनों के पास है जो रॉकेट में मूव कर रहा है. नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं रॉकेट आगे मूव कर रहा है, और जो ग्राउंड पे खड़ा है वो ही है, उसके आगे भी घड़ी है, उसके आगे भी वॉच है. नेक्स्ट, साथ साथ में हम देख रहे हैं रॉकेट भी मूव कर रहा है. एक छोटा सा फॉर्मूला है, समझ में पड़ा है. 9th चैप्टर में पढ़ा हुआ velocity equal to distance upon time. Velocity equal to distance upon time. So the distance equal to velocity into time. So the distance traveled by the rocket in time t between velocity into time. So that is the distance which traveled by the rocket. Next, we can see that ये Pythagoras theorem में समझ पड़ी 12th class में. If we use the Pythagoras theorem, we can find out the new paths. Initial path, initial position, पहले रॉकेट चला था. Then next, green position. Understand? Light को जब यहाँ ग्रीन किया गया, उसका दोनों पर्सन्स अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं. जिसने अपनी की थी और जिस तक लाइट पहुंचने वाली थी, जब तक लाइट तक पहुंची तब तक दोनों पर्सन्स अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं. इन दैट केस लाइट का जो डायरेक्शन है नीचे का अलग हाइपोटेन्यूस. अब लाइट परपेंडिकुलरली ऊपर नहीं, परपेंडिकुलरली नहीं, वो हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस पाथ बना के हुए लाइट. But now we can see that the path traveled by the light has been increased. What will be the time for the person linked with the ground? ध्यान से समझना. One is the moving frame. उसके पास भी घड़ी है, रॉकेट में बैठे हुए, और उसके पास भी घड़ी है, जो रॉकेट में बैठा हुआ. जो लोग रॉकेट में बैठे हुए हैं उन्होंने लाइट की और उन्होंने देखा कितने सेकंड में लाइट सेकंड पर्सन पर पहुंच गई. और जो ग्राउंड में खड़ा हुआ देख रहा है उसके लिए भी टाइम नहीं होना चाहिए था. सपोज 1 सेकंड लाइट ने दिया टाइम, लेकिन जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है पर्सन रेडी है कि टाइम सेम होना चाहिए. बट जो पर्सन ग्राउंड पर खड़ा हुआ है उसकी घड़ी क्या टाइम रहेगी, वो कब देख पाएगा सेकंड इवेंट को. इट डिपेंड्स ऑन उस सेकंड जो इवेंट है उसको कैच करने की जो इवेंट है, जब लाइट पहुंच रही है उसको कब देख रहा है, उस पर डिपेंड करेगा इसका टाइम जो ग्राउंड पर खड़ा है. अब देखते हैं दो टाइम, एक तो मूविंग फ्रेम वाला टाइम और एक जो ग्राउंड पर पर्सन खड़ा हुआ है उसका टाइम. टाइम होगा क्लॉक C equal to C equal to V square plus W square. ऐसा देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से CT. C is the speed of the light, CT is the distance, T upon the velocity. C V square, T is your time of the moving clock. जो लोग रॉकेट में बैठे हुए हैं उनकी घड़ी में जो टाइम है वो हम देखते हैं, उनकी घड़ी में कभी होगा, उनकी वॉच में कभी होगा. C equal to W upon T0. Next, CT equal to solving it, we get CT equal to V square, square root of V square plus W square, CT square plus V square, CT square is equal to W, and if you put the value here, then we can see that see that quantity. That is the theorem. T times for the person linked with the ground, and T0 is the time for the persons moving with the rocket. We can see that how they are arranged. How they are arranged. On multiplying the time in the watch within the rocket.
from that formula. Gamma, we call it the gamma 1/1 minus b square cos c square. This quantity is slightly less than 1. Less than 1. So, what will happen? That this quantity is slightly less than 1. Understand the ratio B upon C. Understand the ratio B upon C. B is the velocity of the rocket and C is that of the light. दो velocities में comparison हो रहा है. Light. Rocket की B है, light की C है. B by C. If rocket is negligible है, then B 0. तो 0 by C is 0. Then दोनों स्पीड सेम होंगे जैसे कि हमने जाना है. But in case of relativity, non-inertial case, in case of relativity, where the speed v is not negligible, जहाँ speed negligible नहीं, then in that case, you can see that the ratio v by c is less than 1. The ratio v by c is less than 1, and 1 minus that ratio is also less than 1. So the quantity 1 upon the resultant is greater than 1. By which we can see that the watch in the ground shows the last time for the same event. Rocket में जो घंटे हैं उनके लिए बहुत सारा है और जो ग्राउंड पर घंटे हैं उसके लिए बहुत बड़ा है. दोनों में अलग है. रॉकेट पर टाइम एग्जैक्टली कम टाइम स्विंग हो गया और जो ग्राउंड पर पर्सन खड़ा हुआ है उसके लिए टाइम स्पेंड हो गया, उसके लिए वही इवेंट देख लो. ठीक है, that is the relativity of the time. Time is not absolute, it is relative. Next. We find out for the different velocities of the rocket, the value of that ratio. We get next. Back. ये रेशियो कैसे निकालते हैं? रॉकेट को तेज है क्योंकि धीरे धीरे तेज है, डिफरेंट वेलोसिटीज पर ये रेशियो आएगा. That is the speed of the light, minus speed of the light, and larger than c major number. यहाँ मुझे ये रेशियो की वैल्यू greater than 1 जैसा कि मैंने बताया, रेशियो greater than 1 है, that is why जो टाइम का स्पेंड हो रहा है लॉन्ग से जुड़े हुए पर्सन के लिए, then it is increasing with the increase of the velocity of the rocket relative to the speed c is the speed of the light. If the c is the speed of the light, then we compare it with that. If the speed of the rocket increases, the value of the ratio increases, and the comparison is finished. As we increase the speed, the dilation, the expansion of the time for the person linked with the ground is more and larger than c. Given that the rocket cannot be move more than the speed of the light. अगर मैंने आपको बताया कोई भी फिजिकल बॉडी को लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाया जा सकता. It has been proved because for larger than speed we get the infinite number. कोई नंबर नहीं इमेजिनरी मतलब पॉसिबल रियल होना चाहिए. इमेजिनरी मतलब आप नहीं कहता कभी रियल कुछ नहीं होता. Then we see that light speed is the key. That is possible. लाइट की स्पीड से ज्यादा आप नहीं चला सकते, आप दौड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चीज भी नहीं बना सकते, इलेक्ट्रॉन भी नहीं चला सकते. नेक्स्ट.
moving blocks पहले शुरू हो जैसे मैंने आपको बताया the block is in the moving frame that it slows down by the factor t equal to gamma t इससे हम टाइम निकाल सकते हैं कि दो ब्लॉक अलग अलग टाइम कैसे बदले सेम इवेंट्स के लिए length correction one important of relativity is the length correction one observer एक ऑब्जर्वर है जो उसको देख रहा है किसी रॉड स्टेशनरी पे और एक ऑब्जर्वर है जो मूविंग रॉड को देख रहा है सो if the velocity of the rod is the relative velocity that is compare the velocity with the velocity of the light then तो यहाँ जो लगती है मैं आपको पहले बता दूं यहाँ ये रॉड है इसकी लेंथ है आप जानते हैं कि रॉड मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ उसकी लेंथ स्ट्रिंग होती है डिक्रीज होती है फॉर द पर्सन लिविंग इन द ग्राउंड दैट इज अगर रॉकेट जा रहा है तो वो लंबाई में लेंथ में छोटा हो जाएगा वी कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू as was the original length and length observing that observer linked with the ground the stationary frame is that L over gamma जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है टाइम इंक्रीज हो जाता है ग्राउंड से जुड़े हुए पर्सन के लिए वैसे ही इस पर्सन के लिए उसकी लेंथ श्रिंक हो जाती है टाइम बढ़ रहा है बट length of the moving object is decreasing shrinking shorter length you can see that and you will develop gamma length measured when object is at rest that is original and the length as is when object is moving you know that gamma is the length from R you can see that as is less than from Aron is the original length so we measure the length and as is the length of the same rod when it is moving. Period of size 0.9. You can see that this is the rod. Zero velocity actually it is moving to the 0.7. It's a part of the speed of the light. Then this is the length of the moving. Then as it increases, it will mass. Understand? According to the theory of relativity, if the velocity of the object is relative, that is comparable with that of the speed of the light, then what happens? Then the mass of the physical body increases. अगर आप बोल रहे हैं आप मालूम नहीं आप मास इंक्रीज हो सकता है 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम वाली मशीन when you inertia theory में when your velocity is relative that is comparable with the light can you believe that your mass will increase accordingly आप 50 किलोग्राम के अगर आप रॉकेट में बैठ जाएंगे कंपेरेबल स्पीड से तो चल रहा होगा तो आप मास बढ़ेगा कंपेरेबल कितना बढ़ेगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं 50 से 55 60 70 your mass will increase ये रिवर्सल है इसका मास है स्टेशनरी भार है आपके अगर 50 किलो फिर जब ये मूव किया लाइट की स्पीड से then the force change the time particular things you can see that gamma and equal to gamma and the original mass पहले वो उसने मशीन पर रहा हो गया मास से कर लिया उसने और फिर रॉकेट पे बैठ के आगे रिलेटिव वेलोसिटी से जा तो बाद में रॉकेट की मशीन बैठी थी मास ने मास अपना ऑब्जर्व किया that he see that his mass is more than the best effect इस कंपोनेंट गामा कंपोनेंट से बढ़ जाए जितनी वैल्यू गामा की उतनी बढ़ जाएगी अगर मैं गामा कह सकता हूं गामा की वैल्यू सबसे पहले
relative mass increases, as you can see. Moving clocks also, moving clocks runs slow, moving objects appear shorter, moving objects mass increases by a factor of gamma. आप रॉकेट में बैठे हुए हैं और आपको लाइट की कंपेरेबल स्पीड से किसी स्टार पर जाना है, आप दो लोग हैं, तो आप यहाँ से जाएंगे और आप यहाँ से लॉक करेंगे, आपकी स्पीड हो सकता है कि वो 400 और 500 बटे आपके लिए पॉजिटिव, आपने कहा 200 बटे गया तो उस स्टार पर लॉक नहीं लगा है रॉकेट से, तो आप अपना कैलेंडर चेक करेंगे तो कोई नहीं, बट ही विल डू दैट, उसकी उसके अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन पूरा होगा टाइम का 1 ईयर 2 ईयर्स होगा। आप एस्ट्रोनॉट्स में आपके लिए टाइम 4 ईयर्स है, बट फॉर दैट पर्सन हु इज गोइंग टू द पर्टिकुलर स्टार द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट द टाइम विल shrink, and for you the time will expand, and for you the age of the person who has gone to the star should be at that date 4 years, but for that person he is 1 or 2 years old.